Hello everyone. Today we are going to discuss a very interesting topic. Last class we were discussing about a term bank. What does it mean bank? We have seen that currency, coins, these all are issued by banks. Now what is the meaning of bank? We all are knowing about bank, we all are visiting bank, we all are talking about bank. But have you ever tried to know what do you mean with bank? Actually, when we are talking about bank, we are talking about commercial. Commercial bank, in day-to-day life it is called bank only. So what is commercial? There is one more bank that is called RBI, Reserve Bank of India. It is also called the Bank of the Government of India. So first of all, let's see what do we mean by commercial bank about which we are talking in our day-to-day life. Commercial bank, as I have written, let's focus on it. Commercial bank, it is a kind of financial institution, related to finance, which carries all the operations related to deposit, means accepting money, surplus money from individuals, and withdrawal of money for the general public, और मांगे जाने पे उसको withdraw भी कर सकते हैं. जो मैंने बात की थी डिमांड डिपॉजिट्स, क्या मतलब है? Providing loans, कर्ज, for investment and so on. So on demand, they also providing investment. These banks are profit-making. These banks are profit-making institution and do business only to make profit. ये profit बनाने के लिए working है. और profit कैसे बनेंगे? हम पढ़ेंगे when we discuss about the loan activity of banks. So let's make it clear the meaning of commercial bank. Now see the functions. Once you go through the functions, you will be very much familiar with these particular operations. But we may not know it through this particular word. Banks are having two kinds of functions. One is called primary function, and second is called this is secondary function. Secondary. It is secondary function. So see the primary function. It is very much known to everyone. Primary function. Number one is accepts deposits. When an individual, when a people is having surplus money, they usually deposit their money, that surplus money, in bank. Do you know? Against such kind of deposit, banks provide interest to the depositor. Second, provides loan and advances. If any individual needs money, they could approach to the bank for getting loan. So in that way, as a part of the primary function of the bank also providing loans. Then after credit cash, the third primary function of a commercial bank is credit cash. It is nothing else. It is a very simple thing. When you are approaching to bank for getting loan, the bank will not give you money in hand. This is called liquid money. When you are having money in your hand, it is called liquid money in terms of economics. Liquid money means the money you can use for anything. But when you are going to a bank for asking the loan, in that circumstances, bank may ask you to open an account in the bank first. Open an account in a bank, and the money about which you are seeking as a loan from the bank, that money, that loan amount is going to transfer in that particular account. That amount is not going to withdraw by you directly in the form of cash. Rather, that amount is going to transfer in the bank account. Why? You maybe have a question, sir, वो लोन है तो
मेरे हाथ में होनी चाहिए, उतने पैसे मैं निकाल सकने का अधिकारी होना चाहिए। नहीं, यहाँ एक पर्पस है। वो मनी लिक्विड मनी के रूप में आपको नहीं दी जाती है, रादर वो बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दी जाती है। उसी बैंक के आपके अकाउंट में पहले है कि आपको वहाँ एक अकाउंट ओपन करनी पड़ेगी, और जो अमाउंट लोन के रूप में आपको दी जाने वाली है वो आपके उसी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। पर्पस ये है, द बैंक इज ट्राइंग टू हैव दैट मनी विद देम, द लोन अमाउंट विद देम विदिन द बैंक। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम लोन लेते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू विथड्रॉ ऑल द मनी एट अ टाइम, you are taking that particular money time to time. For take one example, अगर आपने होम लोन एक लिया, अब होम लोन में अगर आपको 2, 2.5, 4 लाख रुपए अगर ग्रांट हुए हैं, तो वो नहीं कि सीधे आपको कैश मिलेगी, नहीं, वो आपकी जो अकाउंट उस बैंक में ओपन होगी उसमें ट्रांसफर होगी, और उसकी भी इंस्टॉलमेंट वाइज आपको मिलेगी। वंस यू शो द यूटिलिटी कि आपने इतना काम किया, तो वो आपको रिलीज की जाएगी। इससे क्या होता है कि बैंक को क्या फायदा है, एक तो जितना लोन अमाउंट आपको उसने दिया है उसके आधार पे आपसे वो लोन पे टैक्स लेगी, मतलब इंटरेस्ट देती भी है, इंटरेस्ट डिपॉजिट पे, और आपके लोन पर भी इंटरेस्ट वो कवर करती है। लेकिन उसकी पूरी अमाउंट तो एक बार में विड्रॉ कर नहीं रहे, तो दैट मनी इज स्टिल विद द बैंक। और ये जो सरप्लस मनी बैंक के पास आती है, बैंक इसी से वो अपनी बिजनेस करती है, प्रॉफिट इसी से कमाती है। वी विल डिस्कस अबाउट द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, देन यू विल बी वेरी मच क्लियर कि कैसे बैंक अपनी फंक्शनिंग को करती है। बैंक्स आर नॉट अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्शियल बैंक्स आर प्योरली अ प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन, देयर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बनाने के उनके अपने मैकेनिज्म, तो ये प्राइमरी फंक्शन 3 हुई, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, एंड थर्ड वन इज क्रेडिट टू कैश। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस प्रोवाइडिंग लोन्स, बट एक टेक्निकली ये अलग है। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस को समझिए। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है, तो आपको करंट अकाउंट के थ्रू, अकाउंट के भी कई प्रकार होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसके अनुसार ये आपको पैसा देती है उस लोन को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब है ये भी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जनरली कौन रखते हैं? करंट अकाउंट रखते हैं बिजनेसमैन, जिन्हें डे टू डे मनी की ट्रांजैक्शन की जरूरत होती है, वो रखते हैं करंट अकाउंट। नॉर्मली जो सैलरी पर्सन, नॉर्मली जो हाउसहोल्ड होते हैं, वो सभी अपनी सेविंग अकाउंट रखते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक लिमिट में ही आप कर सकते हो पर डे, लेकिन करंट अकाउंट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार का बिजनेस अकाउंट होता है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज उस करंट अकाउंट में दी जाती है, उसकी भी लिमिट होती है, वो कस्टमर और बैंक के बीच के समझौते के तहत होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब है कि when there is less amount in your account, but even though you may take more money from your account, तो ये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब इसकी भी कुछ अलग अलग लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपने आपके अकाउंट में कम है, पैसा ले लिया और आप राम राम करेंगे, पैसा रखा नहीं। इसके पीछे एक तर्क है। तर्क ये होती है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम दे हैव लेस सम ऑफ मनी फॉर देयर बिजनेस टू हेल्प देम कि उनकी बिजनेस एक्टिविटी प्रभावित नहीं हो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाए। नेक्स्ट वन इज परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को यहाँ पे आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ये शेयर की बात है, शेयर मार्केट्स की बात है। तो बैंक आपको फैसिलिटेट करती है कि थ्रू द बैंक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये उस समय इतनी बात है, डिटेल में बहुत टेक्निकल बातें हैं, वो आपको नहीं जानती है। वैसे सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर बात भी नहीं करनी है आपके सिलेबस के अनुसार, बट सिंस द टर्म बैंक्स हैज कम and since you are studying in class 10 and today we should know something more,
so that we could sustain in the life. हम समाज में अपने आप को साबित कर सके कि we are having some sorts of knowledge. इसलिए जानना चाहिए। नेक्स्ट ये जानते होंगे local facilities. Local facilities banks are providing, और इसमें क्या होता है कि if you are having this metals means ornaments हैं, सोने चांदी के गहने हैं, even sometimes people used to keep some confidential documents in the lockers. तो बैंक क्या होता है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए बैंक तिजोरी की फैसिलिटी आपको देती है। लॉकर्स में तिजोरी समझिए, जैसे आपके घर में तिजोरी है, उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट कई बार डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं, अपने सेविंग्स को उसमें रखते हैं, सोने चांदी को रखते हैं, प्रीशियस मेटल्स को, गहने को रखते हैं। तो बैंक भी आपको लॉकर प्रोवाइड करती है, जहाँ आप अपनी इन सेविंग्स के रूप में जो मनी है, कई बार लोग मनी भी रख देते हैं, मतलब कैश। नॉर्मली कैश को उसमें रखने की प्रोविजंस, मतलब कैश को रखने नहीं चाहिए, कोई रोक नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी को नहीं पता क्या रखें। लेकिन कैश जो मनी होती है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सो दैट यू कैन नॉट मोर मनी। आपने कैश अगर रख दिया लॉकर में तो वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। वहाँ रखने की चीज़ क्या है, सेफ करने के लिए तो सोने चांदी के ऐसे गहने रख देते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, ताकि घर में कभी कोई दुर्घटना हो तो वो सुरक्षित है। बट इसके बदले यू हैव टू पे द चार्जेस, द बैंक लॉकर चार्ज आपको बैंक को पे करना होता है, एंड यू आर हैविंग द राइट टू एक्सेस दैट लॉकर। आप जाकर कैसा लॉकर की एक बात और खासियत बता दूं कि your locker is having some special number, and accordingly you are having the key and pin. Nowadays automatic lockers are coming, so pin भी आपको दिया, जैसे ATM कार्ड का पिन होता है उसी प्रकार से पिन और चाबी भी होती है। उसकी एक चाबी बैंक में होती है, जब तक दोनों चाबी नहीं लॉकर में काम करेंगी वो लॉकर नहीं हो सकती। तो ये एक सेफ्टी मेजर्स है। इसके बदले बैंक आपसे चार्ज लेती है, एनुअल चार्ज लॉकर फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट जो है इसकी पेइंग एंड गैदर द क्रेडिट, ये भी उसी प्रकार की चीजें होती हैं कि यदि आपने उधार ले रखा है तो उसको ये अलग अलग किस्म के क्रेडिट होते हैं, उसकी पेमेंट क्या रुक जाती है। इतनी डिटेल्स में इसको जानने की जरूरत नहीं है। मोटो जो है हमारा, जो मेन फोकस है बैंक एक्टिविटी को समझने की, जो हमारे डे लाइफ में है, वो बैंकिंग ये प्राइमरी एक्टिविटी खासतौर से ये, और यहीं से हम लोग अब पढ़ेंगे लोन एक्टिविटी को। बट इसके साथ बिफोर दैट वी स्टार्ट एक चीज और, टाइप्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट है, वी शुड नॉट बी कंफ्यूज। देखिए टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक तीन प्रकार के, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड फॉरेन बैंक। नॉर्मली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बैंक वी फील कि कोई प्राइवेट कंपनी बैंक चला रही है, नहीं ऐसी बात नहीं। प्राइवेट बैंक रेफर्स टू द बैंक्स जिसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेजर प्रपोर्शन ऑपरेशन जो होते हैं उसके, वो इंडिविजुअल्स के थ्रू होते हैं। उसकी जो एसेट्स है वो ओन्ड और पार्टिसिपेटेड बाय इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वो प्राइवेट बैंक, जैसे SBI है, PNB है, ये प्राइवेट बैंक है, जिसको हम लोग एक बार सरकारी बैंक कहते हैं। तो सरकारी बैंक कहने का मतलब ऐसा कुछ सरकारी नहीं, यहाँ पे वो टर्म है कि वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक में क्या है कि ये एक बड़े फोकस को लेकर काम करती है। इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जब वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे है आपका SDFC है, ICICI है। अब ये बैंक भी अब प्राइवेट बैंक की तरह ऑपरेशन करने लगे हैं। पहले इनका एक स्पेसिफिक एरिया था, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ICICI बैंक की बात हुई, लेकिन अब ये भी प्राइवेट बैंक की तरह नॉर्मल प्राइमरी फंक्शन में भी ये काम करने लगे हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेन बैंक। यहाँ है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब होती है ऐसी बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स फॉरेन कंट्री में हो, उनकी ब्रांचेस इंडिया में होती है, तो वो फॉरेन बैंक है। कई देशों में आपके भी बैंक जैसे SBI की कई देशों में ब्रांचेस हैं, तो उन देशों के लिए SBI में भी अ फॉरेन बैंक। फॉर अस सिटी बैंक, HSBC बैंक, Standard Chartered banks, these are the examples of the foreign banks. तो it should be very much clear. ये तीन different types of commercial बैंक होते हैं, private, public और foreign बैंक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक की लोन एक्टिविटी
जो अभी हम लोग डिस्कस की है प्राइमरी उसी की तरह, हाउ बैंक अर्न्स प्रॉफिट। चलिए पढ़ते हैं हम लोन एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक, प्राइमरी फंक्शन अबाउट विच वी वर डिस्कसिंग। और यही वो फंक्शन है जिससे हम बहुत फैमिलियर होते हैं। इसी से इस बात का भी डिस्कशन मिलेगा कि बैंक कैसे प्रॉफिट बनाना। इट इज ऑल अबाउट द लोन एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक। See, I have just trying to through a flow chart I could able to explain what I mean to say. Depositor is what? Those who are having surplus money and going to just put that money in the bank, they are called depositor. For example, if I am having surplus money, I usually deposit that money in the bank in the form of saving account. Usually, since I am a salaried person, so even my salary is going to the bank in my saving account. And whenever I require, I just withdraw that money, and some amount is still inside the account. So whatever money I deposit to the bank, money deposited to bank, bank will pay interest to depositor. जो पैसा जमा करेगा बैंक में, बैंक उसको इंटरेस्ट देगी उसके पैसे। इसके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, डिपोजिटर्स के लिए अलग रेट होते हैं और जो मनी उससे लेता है उसके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अब देखिए उसके पास बैंक के पास मनी डिपोजिट आपने कर ली क्योंकि आपके पास सरप्लस है। एट द सेम टाइम देयर आर नंबर ऑफ पर्सन दोज हु are looking for more money as they are not having sufficient amount with them so that they could run their economic activities or do their day-to-day function. In that case, those people, those who need money, they approaches to bank, and from bank they get loan और क्रेडिट। तो एक समय में सभी के पास सरप्लस मनी में संभव नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ऑलवेज रिमेंबर मनी इज अ स्केयर मींस स्केयर जिसकी कमी है एंड ह्यूमन नीड्स आर इनफाइनाइट अनलिमिटेड। तो सप्लाई ऑफ मनी इज ऑलवेज लेस देन द डिमांड ऑफ मनी एज it is a medium of exchange that is used to fulfill the different demands and needs of the people. तो एक तरफ एक ग्रुप है जो सरप्लस रखता है तो वो डिपोजिट के, दूसरी तरफ एक ग्रुप है जिसे मनी की जरूरत, इसके पास मनी सरप्लस नहीं है तो वो लोन लेगी। अब जो लोन लेगी तो बैंक जो लोन देंगे बोरोवर मींस दोज हु आर गेटिंग लोन और क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, दे आर कॉल्ड बोरोवर, यानी उधार लेने वाले और ये जमा करता। तो बैंक क्या करेगी, बोरोवर से इंटरेस्ट लेती है। देखिए डिपोजिटर को इंटरेस्ट देती है जबकि बोरोवर से इंटरेस्ट लेती है बैंक के पास। मनी लोन टू बोरोवर एंड बोरोवर पे इंटरेस्ट टू बैंक। अब सारा आमदनी का जो फंडा है वो ये सी what I have written, interest to depositor is whatever bank is paying to the depositor against the deposit in the bank is low. Rate of interest on the deposit is always low, and when a borrower is paying interest to the bank, it is more than the interest paid to the depositors. यानी जो जमा करता हो बैंक इंटरेस्ट देती है उससे अधिक इंटरेस्ट वो बोरोवर से लेती है। इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर इज हाई। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वही बैंक की इनकम है। मींस डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स एंड डिपोजिटर्स इज बैंक्स इनकम। सपोज करो डिपोजिटर को बैंक 8% पर एनम के हिसाब से उसने इंटरेस्ट दिया, बट बोरोवर से वो चार्ज करेंगे 50% पर एनम। ये जो डिफरेंस है 15%
पर एनम और 8% पर एनम, ये यही है 7% जो है ये बैंक की प्रॉफिट है। अब इस बैंक की प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट से बैंक अपने सारे ऑपरेशनल कॉस्ट को बेयर करती है, अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, वो सारी फंक्शनिंग यही से करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, कैसे बैंक ऑपरेट करती है। अब एक और प्रश्न आता है कि सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बॉरोवर जो है मींस बैंक जो है वो खुद तय करती है? यूजुअली द आंसर इज नो। एज आई हैव टोल्ड यू, we are having one organization called RBI, Reserve Bank of India, that is the regulating organization of the bank. It is RBI with consultation of the government, they decide about their financial policy. They decide कि आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करेंगे और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बॉरोवर से लेंगे। मनमाना नहीं होता। आरबीआई इज द सुपरवाइजरी बॉडी, सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल बैंक्स। No one can start their own bank without the permission of the RBI. Reserve Bank of India having their own policies and liberties for starting a bank, and those criteria must be fulfilled. Then only the institution, that is RBI, allowed to operate as a bank. So RBI determines such kind of rate of interest. Actually, RBI is the organization that regulates all such kind of activities within the boundary of the country. अलग से हम लोग RBI की फंक्शनिंग को भी पढ़ेंगे। तो RBI एक बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी लोन एक्टिविटीज के ऊपर, डेट एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करती है। एक्चुअली RBI के पास अपनी मैकेनिज्म होती है तो मार्केट में मनी के फ्लो को रेगुलेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। वो कैसे, उस मैकेनिज्म में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बार बार यूज किया है क्रेडिट, 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 लोन, लोन, लोन। ये लोन या क्रेडिट है। अब इसको हम देखते हैं कैसे टेक्निकली इसको डिफाइन कर सकते हैं। लोन मींस क्रेडिट, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके किसके बीच होगा? बॉरोवर के बीच होगा और जो देने वाला, जो लेंडर होगा, देने वाला और लेने वाला, कर्जदार। सपोज इफ आई एम गोइंग टू अ बैंक सीकिंग फॉर अ लोन, तो बैंक एक्ट एज अ लेंडर एंड आई विल बी द बॉरोवर। तो मैं कर्जदार हूँगा और वो कर्ज देने वाला। ओके, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। व्हाट इज एग्रीमेंट? मींस दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के शर्तें लिखी जाएंगी, वो एग्रीमेंट होगी जिसमें ये तय होगी कि आई हैव टू पे दैट मच ऑफ इंटरेस्ट टू द लेंडर within this time period. In the same fashion, it will be also mentioned if in case if I fail to deposit my loan or repay my loan, then what necessary action can be taken by the lender. It must be written and it must be agreed by both the parties. So वास्तव में ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है, ये एक प्रकार की एग्रीमेंट होती है between the borrower and lender. So agreement in which the lender supplies the borrowers. मतलब लेंडर जो है वो मनी सप्लाई करेगा किन शर्तों पे? borrowers को, विथ मनी, गुड्स और सर्विस। अब पैसा भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज। अब बोलेंगे सर गुड्स का मतलब समझेंगे। टेक एग्जांपल, nowadays we are getting a number of home utilities on finance. There are number of finance institutions they are financing, like Bajaj Finserv and other private home credit and all. They are financing. You are going visiting a shop and over there you are taking a laptop or a LCD or fridge, washing machine. On that time you have not given full money, but the company behalf of you
just finance that much of money to the seller, and you are having the right to take that particular goods at your home. But before that, there is an agreement between you and the money lender. तो मनी लेंड करने वाली कौन हो यहाँ पे? वो बजाज फिनसर्व है या होम क्रेडिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके बिहाफ में उस दुकानदार को पैसे पे करती है और आपसे एग्रीमेंट करती है कि इतने ईएमआई पे मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के पेपर आप साइन करते हैं, देन यू आर एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर। तो वही है, तो सप्लाई द बोरोवर्स विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। उसी में एग्रीमेंट क्या होता है कि कितने ईएमआई में आप चुकाएंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सब चीजें वहां पे डिस्क्राइब होती है। इन केस ऑफ फेलियर्स, जो लेंडर है दे आर फ्री टू टेक नेसेसरी लीगल एक्शन डीम्ड फिट। जो भी इस क्षेत्र में, इस मामले में जो उचित निर्णय होगा कानूनी, वो आपके ऊपर एक्शन लेने को स्वतंत्र। दिस इज ऑल अबाउट द लोन और क्रेडिट मींस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ टर्म्स ऑफ क्रेडिट के साथ एक और चीजें ध्यान रखनी होगी कि क्रेडिट सिचुएशंस, देयर आर टू क्रेडिट सिचुएशंस that decides the impact of loan. The impact of loan sometimes positive, sometimes very negative. अब समझिए इस चीज को। लोन फ्रॉम बैंक, when we have credit situation के पीछे में दो सिचुएशन, यदि आप किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं और अगर आप मनी लेंडर से लोन लेते हैं। ये मनी लेंडर कौन है? मनी लेंडर मीन्स जो हम लोग आम बोलते हैं की भाषा में शाहूकार कहते हैं। ये मनी लेंडर कोई भी हो सकता है, इवन योर फ्रेंड who is lending money to you at some rate of interest, your friend, your relative, anyone. That is also called informal sector of credit or informal source of credit. We will discuss about that also. And loan from bank is also called formal source of credit. तो दोनों में क्या होगा? Suppose I am going to start a business, and even I have started, but meanwhile I need some source of money to just increase the production activities. In that case, I have borrowed money from the bank and I put that money for the sake of more production. And meanwhile, fortunately, I grow my business and I earn profit. So this way, that particular loan amount having positive impact. Situation 2, loan from money lender. Suppose Ram is a farmer and he needs some money for the sake of purchasing seeds and fertilizers. He visited a nearby money lender or big landlords having surplus money and took the loan from him. He put that money for the sake of cultivation, but unfortunately, due to unprecedented heavy rainfall, everywhere there is flood. Due to that, there is a complete crop failure. But since Ram had borrowed money from that big landlord or the money lender, so Ram had to pay interest on it whether you have used that particular money for the same or not. But since you have failed to earn anything in that situation, what you need to do? Now again you are just asking for more money so that this year you will do the cultivation and so you could repay the loan that you have taken earlier in this time also. But again there is some sort of supply of that particular grain has been increased. So price of that particular commodity has declined very sharp. In that situation again, Ram is unable to get that much of money that could help him to repay the loan. What will happen in this situation again? Ram is unable to pay the loan. So gradually, the interest become very interest clubbed together and it gives a very huge sum of money. It becomes a burden. So in this way, the loan having the adverse impact on the borrower. So there is a two credit situation, and accordingly
the terms of credit is also very much important, that decides the impact of the credit. So next topic, what we learn about the terms of credit and credit sources of credit, formal, informal, and how credit terms will be defined.